नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में कल ही मिली थी 2 साल की सजा। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को ही राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ राहुल ने गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस बारे में 7 पंक्तियों की एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किया जाता है। यह अयोग्यता उन पर दोष साबित होने के दिन यानी 23 मार्च 2023 से लागू रहेगी। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। यह अधिसूचना लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी हुई थी है। इसकी एक प्रति राहुल गांधी राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लॉयसन अधिकारी, संपदा निदेशालय, संसद भवन, एनेक्सी, एनडीएमसी सचिव, दूर संचार लायसन अधिकारी और लोकसभा सचिवालय के सभी अफसरों और शाखाओं को भेज दी गई है। इस बारे में बात करें तो क्या है कानून। बता दें कि जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को अगर किसी मामले में 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही वह 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, जो कि उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। मामले को जानते हैं, क्या है पूरा मामला जिसमें राहुल गांधी को जो है वो सज़ा सुनाई गई है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी में समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों को अंतिम दलील सुनाने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। राहुल ने इस मामले में सुनवाई के दौरान 3 बार अदालत में पेश हुए। अक्टूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे। राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। अब इस मामले में राहुल को सजा सुनाई गई है। Itself. We know that defamation is an exception to free speech. But over the last several years, we have had repeated examples of unthinkable assaults on freedom of speech, more importantly, on freedom after speech. After speech, you are told that you will be visited with the worst possible consequences, be it criminal, be it civil, be it incarceration, be it intimidation, be it harassment in every sphere of your life. We all know that Shri Rahul Gandhi has been speaking out fearlessly
inside and outside Parliament. He has spoken on social issues, on economic issues, on political issues, without any fear or inhibition, frankly and candidly, through you to India. Clearly, he is paying a price for it. Clearly, this government is rattled because he speaks with facts, figures on demonetization, be it on a supposed clean chit to China, be it on GST. He is consistently aggressive and open in his questioning. And therefore, this government is doing all these, finding new techniques of throttling his voice, of gagging him. Shri Rahul Gandhi goes abroad. He is not entitled to speak freely on grounds of fake nationalism, created imaginary nationalism, rhetorical nationalism, non-existent issues. He comes back and his speeches abroad become the basis of action against him inside Parliament. He speaks in Parliament, one of the most detailed and open speeches when the Prime Minister spoke, and he is referred to the Privileges Committee. After he came back from abroad and post the recess, when this session starts, a remarkably new ground is found, unheard of in the annals of parliamentary history. The ruling party resorts to disruption every day, saying a precondition for someone to speak in Parliament or attend Parliament is that he must first apologize. I don't think in any parliamentary democracy, Westminster or not Westminster, you have found this kind of stipulation. So disruption by the ruling party. All of this is part of a pattern. All of this is part of a pattern to stop him. A, because he speaks fearlessly and candidly. B, to divert attention from the real issues. To divert attention from the questions which my friend here asks every day. To divert attention from the burning issues before the nation today. And it is done also to send a message to create a fear psychosis amongst those who dare to question this government. Friends, that is the political part. That is what should concern our body polity. There is equally a legal part. I have shared some of that with you yesterday. Since we've had slightly more time, let me elaborate a little more today. When you hurry, when you are premeditated, when you have decided to do something, you make mistake after mistake after mistake. You multiply mistakes on a repetitive basis. Take for example, the alacrity with which you are moving. Within 24 hours, you are moving with amazing alacrity. I need to remind you that a few months ago, in a case of another political leader from Uttar Pradesh, belonging to the leading party in that state, the Supreme Court, quote unquote, when an immediate by-election was sought to be announced post-disqualification of that person because of conviction, immediately, without waiting for that person to exhaust the legal remedies available, the Supreme Court in that case not only deferred the by-election, but then added, look with what alacrity have you proceeded. This is yet another example. But it gets curiouser and curiouser. As I told you yesterday, there is a provision created in law specifically called 202, which says, if allegedly I commit a defamatory offence in place X, in this case Kolar, Karnataka, and if somebody chooses to sue me in Gujarat or Bihar, as in this case Surat, then the magistrate before whom a complaint is filed is mandatorily, I repeat, mandatorily
obliged to conduct a preliminary inquiry as to whether he has jurisdiction to start and initiate the proceeding. He has to call for a report either himself or through the police or through agencies. To the best of our knowledge, this point is taken by Shri Gandhi's lawyers, noted in the judgment, and not decided. Admittedly, no inquiry is conducted because there is a tearing hurry to go ahead in a place which might well be without any jurisdiction at all, namely Surat, Gujarat. As I said, it gets curiouser and curiouser. I mentioned another example yesterday. I have the dates now. Let me walk you through it. The complaint is filed approximately in April 2019. I think the exact date is April 16, 2019 at Surat. The magistrate is one Mr. Dave. On 2021, Mr. Rahul Gandhi, in 2021 year, 2 years later in June, appears in the court to record his statement in person. Shri Rahul Gandhi appears in that court. In March 22, that is 3 years after the complaint is filed, and 1 year after Shri Rahul Gandhi appeared there, the complainant files an application against someone Rahul Gandhi. When that application is rejected, possibly by a firm magistrate, obviously he had been called, he had come a second time, you cannot harass people to come again and again, he rejects it. At that point, the complainant rushes to the High Court and gets a stay of his own complaint. The High Court grants that stay on 7th of March 2022. So I file a complaint, I seek a stay of my own complaint. Perhaps days are not auspicious, the climate is not ecologically suitable. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। आपसे निवेदन है, हमारे इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।